In this video, we will be discussing the importance of having and the importance of reading the site design. In order to build the site beautiful like a flower, we are supposed to be able to read the site design, and we are supposed to be having the site design. When we are talking about the site design, we are talking about the FDAT, DAR, SEO, and MOP. What does meant by FDAT? Final Detailed Engineering Design, FDAT. In the FDAT, we will be having an overview of the outdoor equipment installed at the tower or at the monopole. There are two parts of each of the sections of the site design: before and after. In the before section, we'll be having an overview of the equipment that are already installed at the tower. For example, on the screen, you are seeing the equipment already installed before implementation: existing octa-band antennas, plan view, elevation 33 meter. There are existing two FRGT in RF modules, and there are nodes. Nodes are very important to be read because we get more information from the nodes. Existing octa-band antenna on the left side, the second you can see existing octa-band antenna for 900, 1800, UMTS 900, and UMTS 2200, and LTE the okay LTE 1800, LTE 2300, LTE 2100, LTE 700, where the azimuth of this sector is 140, 33 millimeter elevation. On the right side, you see existing octa-band antenna with the same specification as the previous one, and the elevation is, the height is 33 meter. This is sector B. Okay, so that's all about the before. In the after, you will see the proposed or the mandatory installation of the equipment. The after means the site, the outdoor installation should look like this, the one in the after. You will see all the text here in the dark colors. The one in the, those are not in dark colors, in the faded colors. For example, this one, you see, this is the existing equipment, and the rest after implementation: new 30-port antennas, plan view, elevation 33 meter, new FPFH, the power distribution module, new ASNA RF modules, and all the details and the specification are there: the elevation, the azimuth, and the equipment specification. Similarly, for the rock stick, you will see a graphical representation of the rock stick. Existing two RGB modules, the cable passing through from this port. Similarly, existing 34 RGB, this is empty. Existing 18 LD5, which is empty. Before implementation, existing rock stick. And after, when you are leaving the site, the cable should be passing from these particular ports, which you can see in the dark text: dark black, dark black, you can see. Okay, so you are supposed to be passing the cable for the area equipment from this particular port. After implementation, existing rock stick. Similarly, there is another graphical representation of one of the exemplary site for the rock stick. And after you will be leaving the site, you will be passing your cables and your feeders, if they are, from these particular points and ports. Now this is a tabular form of the feeder and rock stick.
you can see the previous one was the graphical, in the graphical form, the graphical representation, and this is in the tabular form. So if you cannot get, or if you are still in suspicious regarding the ports uh, which has been given or reserved for a particular cable, you can get it, see it from here. Okay, this is the tabular form. In the FDID, how will you install the antenna and the other accessories? For example, you can see here new 30-port antenna, this one with the specification, and here new ASNA for LT 2300 MHz C Note 6. Once again, the notes are very important. Similarly, the if you page the power distribution module, so the ASNA module should be installed here, and the power distribution module should be installed here. This is the design. This is the mandatory design we are supposed to be following. New 30-port antenna, new power distributor, and new ASNA for LT 2300 MHz. Now the same from the other view, you can see that there is, if you see this text is faded, mean that this equipment already exists, and we are supposed to be installing these two in the dark colors. This one, the new area RF module, and one FRGU, the RF module, at these particular allocated point. The second one is the DAR. The second part of site design is DAR, document approval request. What information we have and we get from the DAR? The floor plan and the electrical connectivity. You can see the floor plan of one of the sites. You see that here is TR transmission track, there is new flexi multi-radio for GSM 1800 and LT 1800 rack. Here is power safe for batteries, and here is the delta rectifier. These are the existing equipment on the floor plan, and here we are supposed to be installing our own equipment in this activity. New LT 2700 and new FHA power distributor and new LT 1800 2300 system module in these particular locations. Similarly, in the DAR DC power analysis, we have the floor plan and the electrical connectivities, and the electrical analysis and calculations. This is one analysis, power distribution, power DC power analysis for one of the site ZMK 417, which belongs to Makkah. At this site, you see that the Nokia system proposed configuration. Where you get this configuration from? This configuration from SCO. What is SCO? It will be discussed later, but let me tell you something, that it is site change order, where we can get these information. Required power by Nokia system, you can see here for the flexi multi-radio 1800 one area and one air scale with 2 plus 2 plus 2 configuration, it will consume 1723 watt. These are predefined for a given configuration and for a specific equipment. Similarly, for flexi multi-radio 2306 ASNA with 4 plus 4 plus 4 configuration, the total power consumption will be 2400 watt. Similarly for the rest of the two. So the total required power by Nokia system come out to be, when we add all these things, it will come out to be 5779 watts. Existing equipment, these are for new one. This calculation, this power is required for the new for our activity, for the equipment we will be installing during our activity. And for the existing with the given configuration, the total power is 9131 watt. So the total will be, with the existing equipment as well as with the new added equipment, the total power consumption will be 9861 watts, 9131 watts. And with if you add 8% for the charge,
8% for the charge. So it will come out to be 9861.48 watts. Rectifier calculation. In the rectifier calculation, we have, for example, a rectifier module which is operating on 54 volts, 54 DC volts. What is the operating voltage of our telecom equipment? 54 volts. The total power we have 9800, this 9861 watt, and the operating voltage is 54 watts. So we need current. We have power and voltage, and we need current. So P is equal to IV, voltage multiplied by the current. So if we need current, we will divide the total wattage or the watts by the voltage. So it come out to be 182.62 amperes. Now the number of rectifier required. If one rectifier can produce on its output 65 ampere, okay, so, and we need a total current of 182.62 ampere. So how many rectifiers we will need? We will divide the total required current by the output of a single rectifier. So if in this case 182.62 divided by 65, which come out to be 2.81 rectifier, 2.81 units. So we can say that we need 3 units for this particular site to be added, and one rectifier, total number of required rectifier including the standby one. If you add one for standby, so the total will come out to be 4 units. So this is one example of a DC power analysis for aspiration project. Now under the DAR, we are having the fuse allocation diagram, single line diagram, SLD. Those lines and those CBs, circuit breakers, which are in the faded colors, it's already taken, and this one is highlighted with the dark colors. So we will be installing, or rectifier will be, if it is there, okay, then we will not be installing it. But if it's not there, we will be installing 60 ampere rectifier at this particular location. This is very important to make it sure that you are using the same the same circuit breaker according to the site design, with the same specification and the same location. Make sure that it meets both of the qualifications, that it is according to the site design, the location is according to the site design at this particular location, for example, and also it meets the specification in the rating of the rectifier, the circuit breaker 60 ampere, Nokia LTE 2700 megahertz module, C note 1. Once again, it is very important to see all the notes in the site design, the DAR, the SCO. Make sure that you are seeing it. The third section of a site design is SCO, site change order, for 2G, 3G, 4G, 5G, before and after. As I told you, that the site design, you will be seeing both of the things, the before and the after. In the before, you will see the existing equipment and configuration, and the after is meant. What does mean by after? We will be leaving the site like that shown in the after. In the before, if you see the existing configuration for LTE 2700, LTE 2100, this is one example of one of the sites. You will see for the same site ZMK 417 for sector A, cell ID sector A, for sector A, for sector B, sector C. Antenna type is given here, okay, and number of antennas 000, here also 000. Antenna orientation for sector A, it is 140, for sector B is 240, and for sector C it is 290, and the same is the case here. The mechanical tilt 000 for all. The electrical tilt for
here for LT20 for LT700, and 6 and 2 and 3 for sector A, B and C respectively. Here number of carriers 1 for LT2700 for each of the sector, and the same for LT2100. Remote electrical tilt, RETs available or not? Yes, RET available for the both LT700 and LT2100. TMA, no, not available. The carrier bandwidth 20 megahertz. The type of multiple in, multiple out, MIMO 2 multiplied by 2 multiplied by 2, and the same is the case for 2100. The system module here we are using is the FSMF, and here FSMF. Now, and the RF module, RFPA here, and FRGT for LT2700. In the after, you will see the change. The antenna type is different. This is 30 port antenna here, which is different from the previous one, and here it's the same. The antenna orientation the same as it was before. Mechanical tilt 0, it was the same as that one before, and the electrical tilt 444 is the same. The height of antenna is also the same, to 33 meters for each of the sectors for LT700 and LT2100. RET is available as it was before, and the same the rest of the things. What's the difference here? It was feederless. It is feederless, yes. Shared, no. Feederless, yes. The difference is in between the system module. Here AirScale EMEA, there it was FSMF. Okay, and similarly the RF module here RFPA, which is the same, and FRGU, which is the same. So where is the change in the system module? And you can see, you can say shared. Here it was shared for both. It was shared, yes. Now the MOP, method of procedures. Method of procedures, it debates on the technical connections. For example, here for aspiration MOP 2019 and 2020, if you see the Comscope antenna port setup here, okay, it will show you all the technical connections. This particular port is supposed to be used for LG1 1800 megahertz with RET4. Here this particular port, for example, for L700 megahertz RET1 here, okay, and this particular port, for example, for 2300 megahertz RET5, 2300 megahertz RET6, and so on. The MOP method of procedure discusses the electrical connectivity, the technical connections for all the site, including antenna, system module, RF modules. Now, RET, what is meant by RET? Remote electrical tilt. Here is an example of RET's connection guide for 2 octa per sector scenario. How will you connect? How will you make it sure that it is according to design? How will you connect the RETs using only one port of the RF module? Okay, so for example, let's say this is the RF module. You will take for sector A, you will take one cable from the in, from the out of the from the RET port of the RF module. It will go to the in port of sector A. From the output of sector A, it will go to the input of sector B. From the output of sector B, it will go to the input of sector C. So now you are connecting all the 3 RETs using only one port of an RF module. This design is called daisy chain. Now, as we say that MOP method of procedure discusses the technical connectivities. In this section, it is shown all the technical connectivities of the site. In the previous one, it was for RETs, the connections, and the previous from that it was only for antenna. Now, for all the site, you will see the system module, RF modules, the antenna, and everything. Similarly, it discusses the hardware layouts. For example, here one of the system module
that which ports will be used for what purpose. For example, this particular port GE for RP3 RF combo port. This one R RP3 RF port opt, optical link 1. In the same way, it will discuss all the technical connectivities of the site. वीडियो के इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे कि साइट डिज़ाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे कम हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ये अगर हमारे पास है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं है तो क्या नुकसान हम उठा सकते हैं, और एक साइट को खूबसूरत बनाने के लिए साइट डिज़ाइन की अहमियत क्या है, खूबसूरत पुल बनाने के लिए साइट डिज़ाइन की अहमियत क्या है। जब हम साइट डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं 4 चीज़ों के बारे में: द FDED, द DAR, द SEO एंड द MOP। FDED स्टैंड्स फॉर, FDED का मतलब क्या है, किस चीज़ का एब्रीवेशन है? फाइनल डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम जो आउटडोर, फॉर एग्जांपल टावर पे जो एंटेना और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी इक्विपमेंट लगते हैं उसके बारे में बिफ़ोर और आफ्टर डिस्कस करते हैं। इन द बिफ़ोर में क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं? बिफ़ोर में हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो साइट पे एग्जिस्टिंग, टावर पे एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल एंटेना है, RETs है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वगैरह वगैरह। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग ऑक्टाबैंड एंटेना। और इसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन इससे हम ले सकते हैं? जो इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, जो एंटेना इंस्टॉल है, उसकी अजीमत क्या है, उसका जो एलिवेशन है यानी हाइट है वो क्या है, उसका टाइप क्या है, ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हम इससे बिफोर से हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेक्टर B है, एग्जिस्टिंग ऑक्टाबैंड एंटेना है 900, 1800, UMTS 900 और U2100 को जो सपोर्ट करता है। इसकी अजीमत 240 डिग्रीज़ है, एलिवेशन यानी हाइट 33 मीटर्स है, और ये सेक्टर B है। और इसके साथ एक नोट दिया गया है C नोट 4। नोट पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं से जो वाइटल होते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और इसको पूरी तरीके से समझने के लिए। आफ्टर में हमारे पास क्या होते हैं, क्या मतलब होता है आफ्टर का? आफ्टर में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं कि हमें साइट पे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी। हम वेयर हाउस से क्या चीज़ें लेंगे, उठाएंगे, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे साइट पे, किन स्पेसिफिकेशन, किन हाइट, किन अजीमत पे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होंगे। जो डार्क कलर्स होते हैं वो अक्सर आफ्टर में होते हैं। देखिए सारे डार्क कलर्स हैं, इक्विपमेंट भी डार्क कलर है और जो टेक्स्ट है वो भी जो फेडेड है, इसका मतलब है कि FDED में इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी साइट पे एग्जिस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला हम एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ा, न्यू 1FRGU RF मॉड्यूल जो इधर लगा है, न्यू एरिया RF मॉड्यूल जो इधर लगा है, LTE 1800 MHz, C नोट 7। वंस अगेन ये नोट्स पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बाद औक़ात ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको जिनको इधर लिखना आसान नहीं होता, वो ज़्यादा थोड़े डिटेल्स में होते हैं, सही। तो बाज़ औक़ात अगर आप इस चीज़ को नोट्स को मिस करें, तो इनको कंसिडर न करें, इग्नोर करें इसको, तो आपको नुकसान वो उठाना पड़ सकता है। इसी तरह टावर पे लगे हुए इक्विपमेंट के साथ साथ FDED वो रॉकस्टिक की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पोर्ट एलोकेशन है, वो भी डिस्कस करता है बिफ़ोर और आफ्टर। बिफ़ोर में आपके पास क्या होता है, जो पोर्ट्स फॉर एग्जांपल ऑलरेडी टेकन है, एकमोडेटेड है, जो ऑलरेडी ज़ेर इस्तेमाल है, वो जो है ना वो आपको इधर दिखाए गए है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्ट है ये एग्जिस्टिंग 2 RGB मॉड्यूल्स के लिए ज़ेर इस्तेमाल है, 5XDE 1800, 1800 वगैरह। आफ्टर में आपके पास क्या होगा कि जो आप नए इक्विपमेंट आप लगाएंगे उसके लिए, उसके केबल्स के लिए, उसके फीडर्स के लिए आप कौन से पोर्ट्स वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो नया
RGB मॉड्यूल्स फॉर न्यू एरिया LTE 1800 जो आप लगाएंगे उसका केबल आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजारेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये तस्वीरी एक मुआयना है, रिप्रेजेंटेशन है इसका। सिमिलरली बिफोर में ये दूसरा कोई रॉकस्टिक है किसी दूसरे साइड का। इसमें हमारे पास जितने भी पोर्ट्स है और जो टेकन है, जो एम्प्टी है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं से वो सब इसमें दिखाए गए हैं। जो ऑलरेडी पहले से टेकन है वो इन सब की स्पेसिफिकेशन, बस औकात ये तस्वीर अगर क्लियर ना हो तो आप ये स्पेसिफिकेशन इधर से भी ले सकते हैं जो टेबुलर फॉर्म में आपको दिए गए हैं। आफ्टर में क्या होगा सही कि आप जो नए इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं जो डार्क कलर्स में है, ये वाला, ये और ये सही है, इसके जो केबल्स है वो आप किस पॉइंट से किस पोर्ट से आप गुजारेंगे, तो ये आपको इधर दिखाया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अगर ये ज़्यादा क्लियर ना हो, इससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ फॉर एग्जांपल ना आता हो या कोई एम्बिग्विटी हो, तो आप इधर भी इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये जो नए आपके जो नई एक्टिविटी है इसमें आपने इस पर्टिकुलर सेक्टर सी का इधर से FRGU का मॉड्यूल्स का जो केबल है वो इधर से गुजारना है, सेक्टर ए का इधर से, बी का इधर से, सेक्टर सी के अजना का इस पर्टिकुलर पोर्ट से ये सब इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी तरह जो आप एंटेना यूज़ करते हैं, इस्तेमाल इक्विपमेंट वो आप जो लगाते हैं साइट पे, उसके साथ जो एक्सेसरीज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ जो RF मॉड्यूल होते हैं अजना, सही है, या जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सही, वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेंगे, तो इनकी स्पेसिफिकेशन भी इधर दी गई है कि इधर जो है ना अजना लगेगा इस पॉइंट पे, इधर जो है ना पावर डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, और ये टोटल 30 पोर्ट एंटेना है, उसका एक व्यू है। इसी तरह ये जो स्लाइड है इसमें भी यही बताने की कोशिश की गई है, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपके पास एक RF मॉड्यूल FRPA वो LTE 700 के लिए वो ऑलरेडी पहले लग चुका है, और ये जो दो इक्विपमेंट है सही, ये आप इंस्टॉल करेंगे जो डार्क कलर्स में है, ये दो डार्क कलर में है, ये फेडेड कलर में है, तो ये एग्जिस्टिंग है और ये आप नया इस्तेमाल करेंगे, आप नया लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। दूसरी इस चीज़ में है कि जहाँ पर न्यू लिखा होगा सही, इसका मतलब है कि आप ये चीज़ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग है इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है साइट पे। दूसरा जो चीज़ है, जो इसका सेक्शन है साइट डिज़ाइन का, वो है DAR। क्या मतलब है DAR का? डॉक्यूमेंट अप्रूवल रिक्वेस्ट। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आप इधर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और फ्लोर प्लान, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस और फ्लोर प्लान। आइए देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं। ये देखिए, ये किसी एक साइट का ये फ्लोर प्लान है। इधर अब अगर आप इसको देखिए, ये ट्रांसमिशन रेक है, ये NSN नोकिया सोल्यूशन नेटवर्क का रेक है। इधर एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी मल्टी रेडियो फॉर G900, U900, G1800, LTE 1800 इधर एक। इस तरह ये अगर आप देखिए इधर जो है ना पावर सेफ है आपके पास बैटरीज़ के लिए, ये जो है ना आपके पास डेल्टा रेक्टिफायर है, और ये जो है ना ये जो डार्क कलर्स में है ये वो इक्विपमेंट है जो आप इंस्टॉल करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि फ्लोर प्लान और इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन और एनालिसिस डिस्कस करता है DAR। ये एक साइट का, कौन सी साइट का? ZMK 417, उसकी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन है। नोकिया सिस्टम प्रोपोज कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड पावर्ड बाय द न्यू नोकिया सिस्टम। ये नए के मतलब जो नए इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं उसके लिए ये कैलकुलेशन, ये हिसाब किताब किया गया है। ये देखिए आप, फ्लेक्सी मल्टी रेडियो LTE 1800 के लिए एक एरिया और एक एयर स्केल के लिए क्या पावर कंजम्पशन होगी इसकी, कैसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 2+2+2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी पावर कंजम्पशन कितनी होगी? वो है 1729 वाट्स, 1729 वाट्स। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 2+2+2, ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिलेगी SCO से, यानी साइट चेंज ऑर्डर से। और ये इक्विपमेंट के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के लिए एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये प्री डिफाइंड होता है, जैसे कि किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ
ये इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करेंगे। इसी तरह मल्टी रेडियो 2300 के लिए 2400 वाट्स 2400 वाट्स, फ्लेक्सी मल्टी रेडियो LT 2100 के लिए 903 वाट्स, और फ्लेक्सी मल्टी रेडियो जो हम नए इंस्टॉल करेंगे ये सारे इक्विपमेंट इसके लिए 747। टोटल जो है ना ये जो इक्विपमेंट है टोटल सब के लिए हमें रिक्वायर्ड पावर यानी मतलूबा पावर कितनी है 5779 5779 वाट्स। So this is the total required power by new Nokia system by new. Okay, existing के लिए क्या है, जो existing equipment ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं साइट पे उसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, ये टोटल कुल मिला के इधर आते हैं 9131 वाट। ये जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है ये उनकी क्या है, उनकी पावर कंजम्पशन है। अच्छा, टोटल लोड्स ओके। अब बैटरी चार्ज के लिए 0.8% वो कंज्यूम करते हैं, तो टोटल कितना आएगा न, आप उसको 1.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे से तो 9861 वाट्स आपके पास आएंगे। टोटल जो पावर है से ये रिक्वायर्ड पावर है अब आपका 9861 है। ये नए के लिए एग्जिस्टिंग के लिए सॉरी नए के लिए नए इक्विपमेंट्स के लिए ये एग्जिस्टिंग के लिए कुल मिला के और 8% बैटरी चार्ज मिला के टोटल 9861.48 वाट्स बनते हैं। अब रेक्टिफायर मॉड्यूल्स, आपको जिस तरह हमें मालूम है कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज है टेलीकॉम साइट का वो है 54 वोल्ट्स। इस वक्त हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है और एक चीज़ हमें चाहिए। हमारे पास क्या मौजूद है, टोटल पावर, टोटल रिक्वायर्ड पावर ये मौजूद है सही, और हमारे पास क्या मौजूद है दूसरा वो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि 56 है 54 वोल्ट से। अब हमें चाहिए करंट कि हमें कितना करंट जो है ये ड्रैग कर रहे कंज्यूम कर रहे से पूरा जो सिस्टम लगेगा नया और पुराना वो कितना करंट कंज्यूम करेगा। तो अगर आप इधर देखें हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो है P = IB यानी पावर = वोल्टेज टाइम्स करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो अगर हमें करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पावर है उसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे वोल्टेज पे। सो इन दैट केस इट विल बी 9861.48 डिवाइड बाय 54 यानी 9861.48 तकसीम 56। तो ये कितना था 182.62 एम्पेयर्स। ये टोटल करंट है जो पुराने इक्विपमेंट जो ऑलरेडी इक्विपमेंट लगे हैं और जो नए इक्विपमेंट हम लगाएंगे इतना करंट वो ड्रैग करेंगे। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है इस पर्टिकुलर साइट पे ZMK 417 पे हमारे पास जो अवेलेबल रेक्टिफायर मॉड्यूल है उनका आउटपुट करंट हर एक का आउटपुट करंट वो 64 एम्पेयर है। तो अगर एक रेक्टिफायर मॉड्यूल आपको 65 एम्पेयर करंट देता है तो 182.62 करंट के लिए आपको कितने रेक्टिफायर मॉड्यूल चाहिए होंगे। तो हम इसको इस पे तकसीम करेंगे, अच्छा तो ये कितना आएगा 182.62 डिवाइड बाई 65 इट कम आउट टू बी 2.81। यानी अब 2.81 रेक्टिफायर मॉड्यूल तो हम नहीं लगा सकते फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे 3 मॉड्यूल्स इसको हम सील राउंड करेंगे तो 3 मॉड्यूल 3 यूनिट्स वो हमें चाहिए। अच्छा इसके साथ हमें एक और चाहिए से स्टैंड बाई के लिए कि अगर कोई एक इसमें ख़राब हो जाता है ऐसे तो दूसरा वो लोड जो है ना वो उठा सके। तो टोटल हमें 4 रेक्टिफायर मॉड्यूल 4 यूनिट्स हमें चाहिए। इसके साथ साथ DAR में हमारे पास और इन्फॉर्मेशन फ्यूज एलोकेशन डायग्राम से वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम, इसको SLD भी कहते हैं। SLD में या फ्यूज एलोकेशन डायग्राम में क्या होता है, ये जो आप देख रहे इधर ये LED इस्तेमाल हुए RF पावर 1 RF पावर 2 नोकिया IDU, इसी तरह ये नोकिया फ्लेक्सी मल्टी रेडियो, नोकिया फ्लेक्सी मल्टी रेडियो। ओके, तो ये ऑलरेडी टेकन है ज़र इस्तेमाल है तो ये इसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये अवेलेबल थे, ये वाला ये और 3 ये। आप साइट डिज़ाइन के मुताबिक ये वाला पोर्ट हमें दिया गया है, हमारी जो एक्टिविटी है वो हमें एलोकेट किया गया है सेम। और इसकी वो क्या है जो ब्रेकर है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी, तो वो है 60 एम्पेयर आपके पास है जो रेटिंग है, और वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे
आप कनेक्ट करेंगे। SCO जो तीसरा इसका पार्ट है वो है SCO, साइट चेंज ऑर्डर। साइट चेंज ऑर्डर में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एंटेना के जो टाइप्स है, स्पेसिफिकेशन है वो होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ एंटेनाज होते हैं। यहाँ पर आप देखें ये ऑक्टाबैंड एंटेना है, ओके, यहाँ पर सॉरी पेंट एंटेना है, आई थिंक ऑक्टाबैंड है एंटेना है, सही है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ एंटेनास क्या है 000। एंटेना ओरिएंटेशन क्या है 140, 240, 290 फॉर सेक्टर ए, सेक्टर बी एंड सेक्टर सी रिस्पेक्टिवली, एंड द सेम इज़ द केस हेयर फॉर LTE 2100। ये वही साइट जो ZMK417 है उसके लिए आपके पास ये ओरिएंटेशन है। अच्छा, मैकेनिकल टिल्ट क्या है 000 है, इलेक्ट्रिकल टिल्ट क्या है 444 है LTE 700 के लिए, और एक सॉरी 6, 2 और 5 है LTE 2100 के लिए। नंबर ऑफ़ कैरियर्स सब के लिए एक है। एडिटीज़ मौजूद है कि नहीं, हाँ मौजूद है। TMA है नहीं है। कैरियर बैंड कितना है 20 मेगाहर्ट्ज़, और इसके इनके लिए 10 मेगाहर्ट्ज़ है। टाइप ऑफ मेमो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर ऑल द सेक्टर्स। सिमिलरली शेयर्ड है कि नहीं है, इधर आप देख लें, शेयर्ड नहीं है। फीडरलेस है येस, UMTS है फीडरलेस येस। अरे सिस्टम मॉड्यूल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं FSMF, इधर भी FSMF, LTE 2700 के लिए FSMF, 2100 के लिए भी FSMF। RF मॉड्यूल क्या है FRPA है इधर LTE 700 के लिए, और FSMF है, सॉरी सिस्टम मॉड्यूल हाँ FSMF है LTE 2100 के लिए। RF मॉड्यूल क्या है इधर सॉरी FSMF सिस्टम मॉड्यूल क्या है FSMF है दोनों के लिए। RF मॉड्यूल क्या है LTE 700 के लिए FRPA है, और इस यहाँ पर इसके लिए FRGT है। ये भी 4 वाले में है, सही, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आफ्टर में देखिए आप क्या आपको वो नज़र आया, चेंज नज़र आता है इधर, ये एंटेना टाइप जो है ना ये चेंज हो गए हैं, 30 पोर्ट एंटेनाज हो गए, सही है। बाकी तकरीबन सब कुछ सेम है। यहाँ पर आप देखिए सही, तो सिस्टम मॉड्यूल जो है ना वो एयर स्केल है, उधर FSMF था, इधर भी एयर स्केल है। जो दूसरा जो RF मॉड्यूल्स है वो क्या है वो FRPA है, इधर FRGU है, सही। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस यानी सिस्टम मॉड्यूल आप वगैरह और एंटेना टाइप्स वगैरह जो है ना वो आप चेंज करेंगे। सो इस बात को यकीनी बने कि ये चीज़ जो साइट डिज़ाइन है वो आपके पास मौजूद है, और आपके पास प्रिंटेड फार्म में अगर है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाज़ सॉफ्ट फार्म में बाज़ कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मिस हो जाती है। तो अगर आपकी साइट 200 किलोमीटर दूर है और आप कोई भी चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से आपको ना मिले या कोई मिस करे से, तो फिर आपको वापस, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है MDT है वो कंप्लीट नहीं होगी, और आपको फिर मसला होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आप साइट को ब्यूटीफुल लाइक अ फ्लावर यानी फूल की तरह खूबसूरत वो नहीं बना सकेंगे, और आपको मज़ीद टेंशन जो है ना वो आपको मिलेगी। MOP अगला जो इसका सेक्शन है वो MOP है। MOP स्टैंड्स फॉर मेथड ऑफ प्रोसीजर। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल कनेक्शंस पे बात करता है, इसमें ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन होती है। फॉर एग्जांपल ये जो कामस्कोप का एंटेना पोर्ट सेटअप है वो क्या है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, वो सब यहाँ पर आपको दिखाया गया कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर L700 के लिए ये वाला पोर्ट जो है वो होगा RET1, सही। इसी तरह 2300 के लिए 2300 मेगाहर्ट्ज़ के लिए RET6, सही। इसी तरह ये जितने भी पोर्ट्स एलोकेशंस है सही, और जो डायग्राम्स है जो कनेक्शंस है वो आपको MOP में मिलेंगे। इसी तरह आप RET को किस तरह कनेक्ट करेंगे तीनों सेक्टर के, आप RF मॉड्यूल के एक पोर्ट को इस्तेमाल करके तीनों RETs को किस तरह कनेक्ट करेंगे। ये एक RF मॉड्यूल है, ये RF मॉड्यूल का पोर्ट हम लेंगे, सही। ये इधर से जो केबल जाएगा वो सेक्टर A के इन पे जाएगा। अच्छा, तो सेक्टर A की जो RET है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके साइड के साथ। अच्छा, इसके आउट सेक्टर A के आउट से फिर केबल जाएगा वो सेक्टर B के इन पे जाएगा, तो आपकी सेक्टर B जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी। सेक्टर B के आउट से फिर केबल जाएगा RET केबल, वो सेक्टर C के इन पे जाएगा। तो इस तरह आप एक ही केबल को इस्तेमाल करके और RF मॉड्यूल के एक ही पोर्ट को इस्तेमाल करके आप तीनों सेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को कहते हैं डेज़ी चेन। पहले जो आपने देखा MOP के पहले वाले में
वो सिर्फ एक एंटेना के जो पोर्ट कनेक्शन है वो दिखाए गए हैं। इसमें प्रायोरिटीज़ के दिखाए गए हैं, सही है। इसमें आपके पास पूरे जो आपका पूरी जो साइट है, सिस्टम मॉड्यूल, आरएफ मॉड्यूल, एंटेना, आरईटीज़, उन सब की जो टेक्निकल कनेक्शंस है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई गई है पूरी पूरी साइट की। अच्छा, इसमें हार्डवेयर लेआउट्स, एमओपी में हार्डवेयर लेआउट्स, इस पे भी बहस करता है। इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी, हार्डवेयर लेआउट्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको एमओपी में मिलेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल किसी भी, आई थिंक सिस्टम मॉड्यूल एफएसएमएफ है, तो ये उसके जो जितने भी पोर्ट्स है, उसकी टेक्निकल कनेक्टिविटीज़ क्या होगी, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब एमओपी में आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।